Hello, Assalamu alaikum. I am Anam Nawaz, and I'm here to talk about global UGRAD. And I would first start with an apology that I haven't been able to come on time because of a lot of technical difficulties, but I guess we resolved those. So I would begin with an introduction on myself, and as far as I can remember, when I applied to UGRAD, why I applied to UGRAD, application का क्या procedure था, and what was my experience and what I learned from this, and I hope that helps you when you apply to UGRAD. A little bit about myself. So at the moment, I'm studying psychology at the New School in New York, and I'm here on my Fulbright. This is the second time that I've been able to go on an exchange program, and a lot of people say कि एक दफा exchange program हो जाए तो दूसरी बार आप नहीं जा सकते, but that's not exactly true. Even आप Fulbright के बाद दोबारा apply करें आप जा सकते हैं. So I was doing my undergrad from FC College in Lahore in psychology when I applied to UGRAD, and before that मैंने development sector में काफी अर्सा काम किया था. So in 2010 I started working with the development sector, multiple organizations के साथ, and I continued that till 2013. And so I had this background there, and then I applied to UGRAD. So it's important that you do know that applications for undergrad, although ये इतना भी ज़्यादा competitive program नहीं है, but there has to be substance to what you are doing and why they should select you. So like any other scholarship, UGRAD is also based on some sort of merit. So you need to know कि आपकी एप्लीकेशन किसी और एप्लीकेंट के ऊपर भारी क्यों है, क्योंकि बहुत सारी तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल. So it's important that you realize कि आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो दूसरे बच्चे नहीं कर रहे, जिसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा. So in my case, as I said कि right after A levels मैंने काम शुरू कर दिया था, तो मैं काम कर रही थी entrepreneurship के साथ पाकिस्तान में. I was working with British Council, I was working with Catholic Board of Education. It was all part-time, but I was still working. So when I applied, in my application I had these things कि मैंने volunteer भी किया हुआ था, मैं societies का हिस्सा भी थी, मैं dean's list पे भी थी. So you don't have to be an exceptional student, but you have to know कि आप में क्या एक different चीज़ है जिसकी वजह से वो आपको select करें. So it could be anything. मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, 2-3 सर्टिफिकेट्स थे मेरे पास. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. अगर आप अभी से अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कॉलेज के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और डिफरेंट चीज़ों का हिस्सा बने, वॉलंटियर करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम. यू अंडरग्रेड के वक्त टाइम है आपके पास वॉलंटियर करने का, बाद में यू हैव टू वर्क. सो बिल्ड योर प्रोफाइल लाइक दैट. Another thing जो है वो थोड़ी मेरिट की भी बात है कि यू हैव टू मेंटेन अ गुड जीपीए, बिकॉज जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं एक्सचेंज पे, ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता कंपेयर टू हैविंग अ डिग्री जब आप डिग्री पढ़ने के लिए जाते हैं. बट दे हैव टू नो कि आप कंप्यूटर इंसान हैं, और अगर आप बाहर जाएंगे और अपने खुद से अपने चीज़ें करेंगे वहाँ जाके और एक इंडिपेंडेंट तरीके से थोड़े अरसे के लिए रहेंगे, दे नीड टू नो कि आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. सो दे नीड टू नो कि आप पढ़ाई का भी ख्याल रख सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और आप थोड़ा लीजर भी कर सकते हैं. सो ये 3-4 चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी में, आपकी एप्लीकेशन के अंदर. कमिंग टू व्हाई आई अप्लाई टू UGRAD, आई अप्लाई टू UGRAD बिकॉज एज आई सेड कि मैं काफ़ी इनिशिएटिव्स का हिस्सा थी, तो मुझे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे थोड़ा काम करना था. एंड आई थॉट कि मैं आज से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर लूँ और कल को मैं इस चीज़ को और बेहतर करना चाहती हूँ. और UGRAD एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर आई थॉट कि अगर मैं वहाँ अमेरिका चली गई
वहाँ पर जाके मैं और जगह पे वॉलंटियर करूँगी और उससे मेरी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी इन many ways. And when I come back to Pakistan, I will be able to use those qualities to do more things. So this was one of the reasons that I wanted this massive exposure to this new part of the world जिसको हम developing country कहते हैं. तो मैं चाहती थी कि मैं वहाँ के तौर तरीके कुछ हद तक सीखूं जो मुझे मेरी पर्सनालिटी बिल्ड करने में, मेरे काम में, मेरी पढ़ाई में मुझे मदद दें. सो ये एक मेरा प्राइम रीज़न था कि मैंने यूग्रैड पे अप्लाई किया. दूसरा ये था कि आई वाज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और मैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में होती थी. सो आई थॉट कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बट आई थॉट कि अमेरिका में बहुत सारी हिस्ट्री है साइकोलॉजी से रिलेटेड और यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं. तो मुझे वो भी एक्सपोजर हासिल करना था कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या आगे करना चाहती हूँ, मैं इस फील्ड में क्यों रहना चाहती हूँ. तो साइकोलॉजी को एक नए नज़रिए से पढ़ने का मौका चाहिए था मुझे, जो कि मुझे अंडर ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम में नज़र आता था. सो आई वॉज प्लेस्ड इन क्लेरियन पेंसिल्वेनिया, एक छोटा सा शहर है पेंसिल्वेनिया में. एंड वहाँ पे जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड टू एक्सपेरिमेंट विद रैट्स. लाइक हमारे लैब रैट्स होते थे और हमने उनको ट्रेनिंग करनी थी. तो ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी. पाकिस्तान में मुझे किसी यूनिवर्सिटी का नहीं पता जो लैब रैट्स के साथ ट्रेनिंग कराते हैं एज पार्ट ऑफ देयर साइकोलॉजी कोर्स. सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ दैट एक्सपोजर, दिस वाज माय मोटिव कि मैं एक डिफरेंट तरीके से साइकोलॉजी को पढूं और मैं अपना एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट तरीके से बनाऊं. सो ये दो प्राइम मोटिव्स थे मेरे कि लीडरशिप क्वालिटीज पे मैं काम करूं, उनको बेहतर करूं, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूं, एक बेहतर पर्सनालिटी, बेटर वर्क एथिक्स. दूसरा ये कि मुझे मेरे सब्जेक्ट के अंदर डाइवर्सिटी चाहिए थी. तीसरा ये रीज़न था कि मुझे जनरली पर्सपेक्टिव चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान में जब हम एक, मैं सारी ज़िंदगी लाहौर में रही हूँ और पली बड़ी वहीं पे, मुझे सिर्फ लाहौर का पता है. तो पाकिस्तान में रहते हुए भी हम दूसरे शहरों में नहीं जाते, हमें पता नहीं चलता कि लाहौर में बैठे बैठे हमें लगता है बस लाहौर पाकिस्तान है, लेकिन लाहौर पाकिस्तान नहीं है. सो हमें ये नहीं पता होता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, या पेशावर में क्या हो रहा है, या सिंध में लोग कैसे हैं. सो आई वॉन्टेड दिस एक्सपोजर कि मुझे पता चला कि दूसरे ममालिक में भी लोग कैसे हैं. एंड अमेरिका में तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हर किस्म की शख्स से आपकी मुलाकात होती है. तो आई वॉन्टेड दिस डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल एज वेल, कि मुझे थोड़ा सा दुनिया के बारे में पता चले. सो ये तीन प्राइमरी रीजंस थे मेरे अप्लाई करने के यूग्रैड में. And so after I applied to UGRAD, I was placed in Pennsylvania, as I said. And my whole experience was really, say, transforming in many ways. Because एक तो ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजी मैं पढ़ रही थी और उसको इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन्होंने पढ़ाया. वी वर टेस्टिंग दीज लैब रैट्स एंड हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे. सो उसने मुझे बहुत हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ मैं साइकोलॉजी के साथ क्या करना चाहती थी. सो वो एक जो एजुकेशनल, एक नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंस था, वो बहुत डिफरेंट था. और छोटी छोटी सी चीज़ें थी, जैसे हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे जहाँ हमारी रीडिंग्स होती थी, हमने क्विज वहाँ सबमिट कराना होता था. अब ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो पाकिस्तान में नहीं होती थी. सो इससे आप वैसे आपका पर्सपेक्टिव बनता है. सो वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज दिस स्टडीइंग साइकोलॉजी देयर, बिकॉज आई हैड नेवर थॉट कि रैट्स के साथ कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, लाइक उनको हम क्या सिखा सकते हैं, बट आप सिखा सकते हैं उनको. सो हर किताब में नहीं होती, हर चीज़ की एप्लीकेशन होती है. एंड पेंसिल्वेनिया में वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी. दूसरी ये बात थी कि इन दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे साथ आई गेस 150 बच्चे आए थे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गए थे. सो दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो हेल्प्स यू मेक दीज फ्रेंड्स जो दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में से होते हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, और आप उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं. आप एक नया सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बनाते हैं और फिर वो एक आपको एक नई किस्म की लर्निंग के लिए ओपन करता है.
दिस माय एक्सपीरियंस विद मेकिंग दीज न्यू फ्रेंड्स, और फिर मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, जो लोकल स्टूडेंट्स थे काफ़ी सारे। सो उनसे बात करने का, उनके तौर तरीका ऑब्जर्व करने का, उनको थोड़ा सा अपने तौर तरीका समझाना, ऑल ऑफ दैट इज एन एक्सपीरियंस जो कि आई थिंक आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है, बिकॉज जब आप एक दूसरे मुल्क में हैं एज अ पाकिस्तानी, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है, आपने अपनी हैबिट से, अपनी तौर तरीके से उनको बताना है कि पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं। सो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं उसके साथ, एंड यू रियलाइज के आपके हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। और ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है, एंड ये मेच्योरिटी लाती है आपकी पर्सनालिटी में, आई थिंक। सो इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी डाइवर्सिटी भी सीखी, बट मैंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में सीखा, जो जिसने अल्टीमेटली मुझे हेल्प किया कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी स्टडीज के अंदर वो चीज़ें अप्लाई करती थी। इसके अलावा इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया था कि देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बिकॉज वन इनिशियली जब मैंने अप्लाई करना था यूग्रैड में, आई वाजंट श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन ये है कि अगर आप एक दफ़ा जहन बना लो एक चीज़ करने का, एंड इफ़ यू हैव द राइट रिसोर्सेज, इफ़ यू टॉक टू द राइट पीपल, यू कैन गेट थ्रू इट। सो इस पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था कि आई हैव द capability of doing things, and I was able to do it. I was in Pennsylvania, and I was learning all these things, and I was there. So in terms of confidence, it helps. In terms of making a perspective, it helps. In terms of studies, उसने मुझे help किया. So this whole experience really helped me in many ways. Um, and it's also very intense. Like आप पढ़ भी रहे होते हैं, आप दोस्त भी बना रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आप अमेरिका पहली दफा आते हैं तो आपको फिरना भी होता है, सो आपको दूसरे शहरों में भी जाना होता है, सो आप काफी सारा लग्जरी भी करते हैं। सो इन मेनी वेज लाइक दिस इज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर बहुत सारे अंडर ग्रेड में जो स्टूडेंट्स जाते हैं दे कम आउट एज पीपल, बिकॉज एज आई सेड एक सिटीजनशिप की इम्पोर्टेंस, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको महसूस होती है जब आप अमेरिका में होते हैं या किसी और मुल्क में होते हैं। आपको फील होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मुल्क की तरफ। सो ये चीज़ें 4-5 जो हैं, ये इन्होंने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट किया था, और मतलब मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों के बारे में था। सो एज फार एज द एप्लीकेशन इज कंसर्न, द थिंग इज दैट अगर आपने एक दफ़ा जहन बना लिया कि आपने यूग्रैड पे अप्लाई करना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो द फर्स्ट ईयर यू आर इन योर अंडर ग्रेड, अगर आपने सोच लिया कि मैंने यू ग्रेड करना है अपने अंडर ग्रेड में, और आपका पहला साल है, पहले साल से आपको चाहिए कि आप सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन करें, आप कॉलेज की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, आप एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने। बेशक आप फुल टाइम काम ना करें, बट पार्ट टाइम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहें, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट UGRAD when they select you, they will look into it कि आप कितने responsible citizen हैं. Um, so you have to work on your application from day one, from the day that you decide कि मैंने apply करना है, आपको अपनी application पे उस दिन से काम करना शुरू कर देना चाहिए. Number 2, because it is a merit-based scholarship, तो पढ़ाई को भी easy नहीं लेना. You have to study hard, you have to maintain a GPA. If you don't maintain a GPA, you will not get into it. So आई अग्री, ठीक है 4.0 GPA होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन GPA आपको चाहिए, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट आप इसको ईजी ले सकते हैं. सो वर्क ऑन योर GPA,
and work on your activities and your volunteerism. So volunteer करना इतना ज़रूरी है, especially undergrad में and even after that, that it gets you to a lot of things. For example, as I said कि मैंने A levels के बाद ही काम थोड़ा करना शुरू कर दिया था, so मैं सिर्फ volunteer नहीं करती थी, मैं काम भी करती थी. But जब मैं क्लेरियन में आई तो they required us to do 23 hours of volunteer work as part of the UGRAD. So जब आप UGRAD में आते हैं, they require you to do certain things. One of them is कि आपको एक अपना वो एक आपको प्रिंटेड पासपोर्ट टाइप एक डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी एक्टिविटीज लिखनी होती है कि इस महीने मैंने ये कल्चरल चीज की, इस महीने मैंने वहां गई, मैंने ये किया, इस चीज से मैंने ये सीखा. दे एक्सपेक्ट यू टू राइट इट डाउन एंड दे एक्सपेक्ट कि आप उसकी तस्वीरें भी उनको भेजेंगे. इस तरह की कुछ चीजें होती हैं. एंड पार्ट ऑफ दिस वाज कि आपने 23 आवर्स वॉलंटियर करना है अपने ही एरिया में किसी भी चीज में. सो मैं चूंकि बहुत छोटे से शहर में थी, तो मैंने 3-4 जगह पे वॉलंटियर किया एंड आई एंडेड अप विद 44 आवर्स ऑफ वॉलंटियर वर्क, which was appreciated by the UGRAD team. So there is no limit to volunteer work because in any case it's helping you learn, right? It's helping you develop as a person. It's helping you with some professional skills. So I would say that आप चाहे पाकिस्तान में चाहे आप किसी और मुल्क में, you need to volunteer. Even though I am here on Fulbright again, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का हिस्सा बनती हूँ, मैं वॉलंटियर करती हूँ, मैं अपना टाइम डेडिकेट करती हूँ सोशल चीज़ों के लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. सो certain things, these are certain characteristics that people who are going to select you for the undergrad will look at. So you need to be conscious of this, और आप लोगों को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबली ख्याल रखना चाहिए if you want to get somewhere. So I talked about my experience in my GPA. Another thing is कि जब आप application के लिए apply करें, so you need to have a clear goal कि आप ये UGRAD क्यों करना चाह रहे हैं. एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके UGRAD के अंदर जो इनकी सिलेक्शन टीम अपने जहन में रखती है is कि आप एज अ कल्चरल एम्बेसडर या आप एज अ पाकिस्तानी जब अमेरिका में आएंगे तो आप इस सोसाइटी को क्या देंगे. Because America is a lot about diversity and they appreciate कि दूसरे cultures से लोग आए, हमें अपने culture के बारे में बताएं. They appreciate all these things. So they expect you to know certain things about your own culture, कि आप अपने culture को किस तरह से follow करते हैं, आपके लिए क्या चीज़ important है, और आप अगर अमेरिका में होंगे तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे about पाकिस्तान, about your culture, आप उनको किस तरह से educate करेंगे, उनका knowledge किस तरह से बढ़ाएंगे. So that is one very clear goal of the undergrad program. So if you need to be clear about this fact कि आप जब undergrad के लिए आएंगे तो आप किस तरह से contribute करेंगे as a citizen here, as a temporary citizen here. So this you have to decide कि आप कैसे करेंगे contribute, but it has to be very clear and it has to be communicated in your application. So when you're writing your application, आपने communicate करना है कि आप करना क्यों चाहते हैं UGRAD, और वो कोई भी reason हो सकता है. मेरे लिए 3 reasons थे, लीडरशिप के, पर्सपेक्टिव के और साइकोलॉजी पढ़ने के. आपके लिए कोई और से 3 reasons हो सकते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं ये चीज़ इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए. सो बी क्लियर ऑन दैट एंड ऑल्सो ट्राई टू एड समथिंग कि कल्चरली आप क्या एक्सचेंज करेंगे. जब आप पाकिस्तान से अमेरिका आएंगे तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या देंगे सोसाइटी को, जो उस सोसाइटी को हेल्प करेगी या उस सोसाइटी के मेंबर्स को हेल्प करेगी. और जब आप पाकिस्तान से अमेरिका जाएंगे, सॉरी अमेरिका से पाकिस्तान जाएंगे, तो आप कौन सी ऐसी अमेरिकन वैल्यूज हैं या हैबिट्स हैं जिनको आप लेके जाएंगे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को मदद करेगी या सोसाइटी को मदद करेगी. सो यू नीड टू बी क्लियर बिकॉज दिस इज एन एक्सचेंज प्रोग्राम. सो इट इज अबाउट exchange. So you give your cultural value to American people, and American people, you're expected to take some values from the American people too.
योर होम कंट्री, एंड दिस यू हैव टू थिंक कि आपने क्या कौन सी वो वैल्यूज हैं और कैसे आप वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन एज वेल. The last thing that I want to talk about in terms of application is make sure that you have some substance. Make sure कि आपने कोई community काम किया हो, आपने कोई extra curricular activities में हिस्सा लिया हो और आपके पास application में show करने के लिए वो हो. Because as I said, when you go on an exchange, it is not a very easy thing to do. Because हमें अकेले रहने की भी आदत नहीं होती, एंड ऑल्सो बिकॉज फॉर 6 months एक्चुअली आप खुद अपने साथ रह रहे होते हैं एंड आपने हर चीज़ अपनी खुद से करनी होती है. आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने कम्युनिटी वर्क भी करना है, आपके ऊपर कोई कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे काम करना होता है जो UGRAD को चाहिए होता है. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि UGRAD तो वेकेशन है, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, वेकेशन भी है, थोड़ा सा मज़ा भी होता है, बट बहुत सारा काम भी है. सो इट कम्स डाउन टू हाउ वेल यू कैन मैनेज दैट, एंड दे नीड टू नो दिस इन योर एप्लीकेशन कि आप एक कम्पिटेंट इंसान हैं, और अगर आप पे प्रेशर डाला जाएगा तो आप उसको कर सकेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप उसको छोड़ के बैठ जाएंगे. दे नीड टू नो दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, you are responsible for the culture that you belong to, and they need to know that you are a strong person. So ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में नुमायाँ होनी चाहिए और वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि इन द पास्ट मैंने ऐसे किया हुआ है. And you don't necessarily have to say I'm a strong person and I can do things. You have to give them examples. Okay, in the past I was involved in this project. This is how I managed it. This was the outcome. So जब आप उनको अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स देंगे, they will be able to infer or they will be able to assume that आप इस चीज़ के लिए capable हैं. So you don't have to say I have leadership qualities and I am independent. You don't have to say things like that. आपने अपनी एग्जाम्पल्स देनी है, आपने अपनी एप्लीकेशन को पर्सनलाइज करना है, अपने बारे में बनाना है, अपने बारे में स्टोरीज बतानी है. So generally in this whole application process, you start with, as you start with anything else, you start with the big question कि आप UGRAD करना क्यों चाहते हैं. अगर आप उसको वाकई करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए काम करना शुरू कर दें. आप वॉलंटियर करें, आप एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने, आप एक्सप्लोर करें, एक ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर करें ऑप्शंस. आप देखें आपको क्या पसंद आता है, जो चीज़ आपको पसंद आती है वो आप क्यों करते हैं. इन सब के जवाब आपके पास होने चाहिए, बिकॉज लेटर ऑन इन द इंटरव्यू प्रोसेस एज वेल वो आपसे पूछना है. सो अगर आप हर चीज़ एप्लीकेशन में नहीं भी लिख रहे तो एटलीस्ट आपके पास एक रीज़न होना चाहिए फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन इन योर एप्लीकेशन. So you write them concisely and precisely, focus के साथ, and you make sure that there is enough substance or there is enough background to why you're applying. So वो क्यों आपको सेलेक्ट करेंगे, that is the primary question. कि कोई इंसान आपको अंडरग्रेड के लिए सिलेक्ट क्यों करेगा जहाँ पे उनके पास 4000 एप्लीकेशंस हैं, तो वो आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे. सो आपने अपना सेलिंग पॉइंट यहाँ पे खुद बनाना है, और वो सेलिंग पॉइंट कुड बी योर वर्क, योर पर्सनालिटी, या आप वापस आके क्या करना चाहते हैं, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू keep in mind while writing your application, and that you need to think before writing your application. You need to do some analysis of yourself, some retrospection, और आप सोचें कि आप जो हैं वो आप क्यों हैं और आप कहाँ जा रहे हैं सबके साथ, आप क्यों कर रहे हैं सब चीज़ें, because this will give you focus, and this focus is important for this application. So that's, I think, precisely what I want to say about my undergrad experience, the application process, and my experience in the US. We have a comment, and
And the question is, what things to include in statement of purpose? So as I said, that your statement of purpose should start with the question why. कि आप UGRAD क्यों करना चाह रहे हैं? जैसे मेरे लिए था that I wanted to explore psychology and I wanted to explore these leadership um, qualities जो मैं यहाँ पे experience करना चाही थी. So my aim for applying to UGRAD was to study psychology with a different perspective. It could be anything for you. So it doesn't जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ाई related ही होना चाहिए, कोई भी चीज हो सकती है आपके लिए. But when you're writing your statement of purpose, you must start with the question why you're doing something. और फिर आप एक स्टोरी बनाएं उसके आगे, एक नैरेटिव बनाएं अपना कि मुझे ये इसलिए करना था, क्योंकि मुझे UGRAD इसलिए करना है क्योंकि मैं नंबर ए ये चीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. और फिर उसके साथ आप उनको बताएं कि पहले मैंने इस चीज को ऐसे ट्राई किया, या पहले मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, मैं जब काम कर रही थी या मैं जब वॉलंटियर कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी तो मैंने ऐसा फेल किया और मुझे लगता है ये चीज मुझे सीखनी चाहिए. और मुझे लगता है ये चीज अगर मैं अंडरग्रेड में जाऊंगी, अगर अंडरग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम में जाऊंगी तो मैं ये चीज सीख सकती हूँ. तो आपने कनेक्ट करना है अपना क्वेश्चन why you want to do the undergrad. उसको कनेक्ट करना है एक स्टोरी के साथ जो आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी होगी कि आपने उस चीज को, आपको क्यों लगता है कि आपको वो चीज अकम्प्लिश करनी है. एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ यू विल डू इट. व्हाट आप अंडरग्रेड में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर आके ऐसी क्या चीजें करेंगे जिससे आप अपना एक चीज जो आपने सिलेक्ट किया है कि मैंने ये सीखनी है, कि वो आप कैसे सीखेंगे. So you have to start with why, you have to go about how you will do it. Why you want the undergrad? You want undergrad because आपका एक रीजन है. उस रीजन को अचीव करने के लिए आप अंडरग्रेड के अंदर ऐसी क्या चीजें करेंगे ताकि आप वो अचीव कर सकें. और वंस यू हैव अचीव्ड इट, तो आप जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो आप अमेरिका से क्या चीजें लेके आएंगे, और चीजें मतलब कौन सी वैल्यूज वगैरह सीख के आएंगे जो कि आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप वो चीजें अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तानियों को, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को उससे क्या फर्क पड़ेगा. सो इट ऑल हैज टू बी सराउंडेड बाय एक तो नंबर 1 पर्सनल नैरेटिव, नंबर 2 क्लैरिटी ऑन कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे करेंगे, और जब आप कर लेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा. So these three things have to stay together and they have to make sense, provided कि आपका substance है in the past in your application. If your story is convincing, you will be selected. But एक clarity होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि UGRAD करना है क्योंकि मैं हर चीज सीखना चाहती हूँ, about my subject मैं हर चीज सीखना चाहती हूँ. आप हर चीज नहीं सीख सकते, टाइम भी नहीं होता, और हर चीज आप नहीं सीख सकते. सो यू हैव टू बी कंसाइज कि मैं अपने सब्जेक्ट में ये चीज सीखना चाहती हूँ, या मैं कल्चर के बारे में ये चीज सीखना चाहती हूँ इसलिए मुझे अंडरग्रेड जाना है. इट कुड बी एनीथिंग. आई कीप टॉकिंग अबाउट के पढ़ाई वाइज आपको क्या करना है, क्या सीखना है, लीडरशिप वाइज आपको क्या सीखना है, बट दैट इज बिकॉज मैंने ऐसे किया था. आपकी एप्लीकेशन मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए, फर्क होनी चाहिए. सो इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन आपको काफी सोचना पड़ेगा कि आपको इसको क्या हैंडल देना. सो आई थिंक देयर आर नो अदर क्वेश्चंस, but if there are any other questions, you can make your comments on this and I would be happy to answer later on. If you need any more information, you can contact Scholarship News and I'm sure they will be happy to help. And I hope कि ये जो आज का session था, it has helped you and it will be able to help you. I hope I was clear with what I was saying, and I think I would wish good luck to everyone and anyone who is applying for this, and I hope you get in. I hope this was helpful. So take care and
Good luck.